Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in this video, I am sharing a real life story of a person with whom I interacted today. So, I booked a taxi, and the taxi is from Ola. And when I rode the taxi, I started discussing certain things with taxi driver. The discussion started with CNG price and how this has risen in few days and how it affected his life. And during discussion, he started, sir, 2 years ago, before second wave of COVID, I was running a factory. And in this factory, my turnover was more than 1 crore. And due to COVID, my payments struck in the market, and ultimately I have to wind up the business. So he said, now people are not using mask and they don't understand the importance of mask. And I am sufferer of second wave of COVID. Then he said, okay, I lost everything, but I started with a new activity, that is this taxi. Now I am running this taxi. Throughout the day, I work very hard. I start my taxi drive at 8 a.m. and end up with the last trip around 11 p.m. Throughout the day, I am able to get 2,000 to 2,500 rupees as fare. Then around 1,500 goes in the fuel, and ultimately I save 700 rupees a day. It is very less amount to sustain in Delhi, but still I am not unhappy. I have adjusted my life to this activity. I am working hard, and I am sure one day I will come out of this crisis and I may revive again. Now, what is the message from this story? The message of this story is, in our life, there are occasions when we are at a upper stage and some sudden events can bring us back to a lower stage. And there are people, though are at lower stage, they work hard and they reach the higher stage. So sometimes I wonder, when people are unemployed, they are struggling, they want to get a job, the moment they are selected, they develop cold feet. So many advisor comes and tell them, this job is not good, that job is not good, your work life will be bad, your emolument is less, that job is good. But once you are unemployed, where is work-life balance? When you are unemployed, where is the money to sustain? Now some organization is taking you as an employee. The organization is ready to give you some wages, and in turn that organization is asking you to work, and now you have fallen into a wrong discussion that how I should have a comfortable life. Life is never comfortable. We have to live with the life. We have to adjust ourselves according to the circumstances of life. And this story tells a person who was running a business, crores of rupees. Now he is running a taxi. He is carrying the passengers and living in a meager amount of 700 rupees a day. That is his net salary after working right from 8 a.m. to 11 p.m. in the night. And if a person who has to work hard in a bank and selected as a probation officer, and the cost to company is 70 to 80,000 rupees a month, and if that chap is unhappy, so what we can call? Even a clerk
when he will go to a job, the cost to the company may be around 40,000 rupees a month, and he is giving some hours and getting this money. So once we start looking at the people those are struggling, we will drive happiness. And if we will only fall in false discussions, we will lose whatever we have. So always apply your brain. Don't be driven by the people those are trying to give advice of no use. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक सच्ची कहानी डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये कहानी आज मुझे सुनाई एक कैब ड्राइवर ने. आज सुबह मैंने एक कैब बुक करी ओला से. मैं उस कैब में बैठा. बैठने के बाद हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई सीएनजी प्राइस से. उसने कहा साहब सीएनजी की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, बहुत दिक्कत आ रही है. फिर उसने बताया कि सर 2 साल पहले जो सेकंड वेव की वजह से मुझे प्रॉब्लम आई. सेकंड वेव हमारी आई है लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर की वो बात कर रहा है कि सर उससे पहले मेरी फैक्ट्री थी, 1 करोड़ के करीब टर्नओवर थी, काफ़ी पैसा मार्केट में था. सेकंड वेव आई, मेरा पैसा फंस गया, मैं उसको नहीं निकाल पाया, मुझे बिजनेस बंद करना पड़ा. मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने ये टैक्सी चलाना शुरू किया. अब मैं टैक्सी चलाता हूँ. सुबह 8 बजे से शुरू करता हूँ, रात के 11 बजे तक मैं काम करता हूँ. अब सीएनजी की प्राइस बढ़ गई है. लगभग 2200 से 2500 रुपये रोज़ की मेरी आमदनी होती है, मतलब कलेक्शन होती है. 1500 के करीब की गैस डल जाती है. 700 रुपये मेरे रोज़ के बचते हैं. मगर मैं दुखी नहीं हूँ, मैं असंतुष्ट भी नहीं हूँ, मैं परेशान भी नहीं हूँ. साथ ही उसने कहा कि सर लोगों ने अचानक मास्क लगाना छोड़ दिया. अब मास्क से आप देखो कितने लोग बच सकते हैं. अब कल को दोबारा प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा. अब यहाँ पर जब हम इस व्यक्ति के स्ट्रगल को देखते हैं कि उसने अच्छे दिन देखे, वो एक अच्छी पोजीशन पे भी था, मगर एक इवेंट ने उसको नीचे ले आया. सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक काम कर रहा है, सिर्फ 700 रुपये कमा रहा है, फिर भी संतुष्ट है. मगर मैं देखता हूँ जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, दुखी होते हैं, फिर वो जॉब में कहीं सिलेक्शन हो जाती है. सिलेक्शन होते ही उनका थॉट प्रोसेस बदल जाता है. अब उनको लगने लगता है कि हम ऑफिसर बन गए, कॉस्ट टू कंपनी 70 से 80 हज़ार रुपये है, ये भी बेकार है, यहाँ मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बेकार हो जाएगा. क्लर्क सेलेक्ट होते हैं, कॉस्ट टू कंपनी 40,000 के करीब है, उनको लगता है क्या लाइफ है ये. पर अगर जब आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो क्या वर्क लाइफ बैलेंस है आपका. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नौकरी देगी, आपको पैसे देगी, आपसे काम तो करवाएगी. तो ऐसा कैसे होगा कि जिस आदमी के पास कुछ नहीं है, वो बेचारा टैक्सी ड्राइवर जो एक बिजनेसमैन था, अच्छा भला, टैक्सी चलाने पे मजबूर हो गया, 700 रुपये लेके भी खुश है. और आप अनएम्प्लॉयड थे, आपने मेहनत की, आपको एक नौकरी मिल गई है, आप दुखी हो. और दुख का कारण क्या है. वो लोग जो बेमतलब की आपको सलाहें दे रहे हैं. दुख का कारण क्या है. जो आपको अनसॉलिसिटेड सलाहें दिए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, और आप परेशान हुए जा रहे हो. जब तक कुछ नहीं था, जॉब नहीं थी, आप जॉब के पीछे भाग रहे थे. जैसे ही वो जॉब मिल गई, अब आपको पता नहीं क्या परेशानी शुरू हो गई. तो रियल जिंदगी में जिए. इस जिंदगी में कभी भी कंफर्ट नहीं है, ये मान लें. कुछ भी आपको हासिल हो जाओगे, कभी आप कंफर्टेबल तो हो ही नहीं सकते हो. पर जैसी भी जिंदगी है, उस जिंदगी के साथ अपने को एडजस्ट करना, उस जिंदगी को जीना, उस जिंदगी में आगे बढ़ना ही आपको खुशी देगी. मगर अगर आप सोचोगे कि जिंदगी आपके अनुसार बनेगी, खुशियां लेके आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा.
और आप सारी जिंदगी परेशान ही रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।